Hello everyone, welcome back to Jiffy Learning. In this video, we'll be studying about French Revolution. Let's start the video. What actually led to the start of a revolt as big as this? It was a rumor that circled around 14th of July 1789 which stated that the King of France is going to open fire on the people of France. As a result, the city of Paris was filled with terror और ये खबर जंगल में लगी आग की तरह फैलने लगी. As a result, the people were compelled to think of doing something great and then dying for the nation. लोगों को लगा कि मरना है तो कुछ अपने नेशन के लिए राष्ट्र के लिए कुछ बड़ा करके फिर मरो. Now in the series of events, something great was about to happen. Let's move on to the next slide. Since the people were planning for a big revolt, what was needed? Yes, exactly. Weapons were needed for a big revolt. Now, from where can we get the weapons? So, the citizens or the people they decided to steal and plan the loot of weapons kept under the government offices. जितने भी सरकारी खजाने थे, सरकारी दफ्तर थे, सबको टारगेट किया गया और वहां पे रखे हुए हथियारों को अपने कब्जे में लेना शुरू किया गया. पर अब इसके लिए एक आर्मी की जरूरत थी. What happened next? Next, move on to the next slide. Target bana the fort of Bastille. People's army was made that included around 7,000 men and women, and the Bastille fort and the prison was stormed by thousands of people around, looted, and broken down for treasures and weapons. In the series of events, commander of Bastille jail, Bernard René Jordan Delaunay, was killed in the battle for weapons, and the prisoners were released. Although there were merely 7 prisoners in the Bastille jail, people hated the Bastille as it stood for the despotic power of the king. ये जो बेस्टाइल का किला था ये वहां के राजा के शक्ति का प्रतीक माना जाता था, इसीलिए लोगों के मन में इस किले के प्रति बड़ा ही आक्रोश था. People protested against the high price of the bread, and a new chain of events began, which led to the execution of king in the France. So basically, अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को सिंपल सी एक स्टेटमेंट में समराइज करना चाहें तो एक कहानी आप बचपन से सुनते आए होंगे, एक था राजा एक थी रानी दोनों मर गए खत्म कहानी. So actually, French Revolution is all about this. Let's study in detail. Now let's study the division of society of France in the late 18th century. It was divided into 3 estates. Clergy included the clergy as a whole, usually divided into higher and the lower clergy. There was no specific demarcation between the two groups. The upper clergy from the second estate families were essentially clerical aristocracy. Every bishop in the France was a nobleman in the age of the Louis XVI, a circumstance which had not existed even before 18th century. Talking about the second estate was the aristocracy and monarchy of the France, other than the king himself, who remained outside the state system. The third estate, it included all those who were not the part of any of the above. Summarizing it, so basically the people who were working for the church were included in the clergy or the first estate. Nobility included all the royal people or the people associated with royal blood. So they were under the second estate or the nobility, and the remaining came in the third estate. So basically, the third estate was divided into again two classes, public and private, making up more than 90% of the population of France. अब इसमें भी डिवीजन कैसा था? कुछ बड़े ही रिच मर्चेंट्स थे, कुछ लैंड ओनर्स थे, और बाकी क्या थे? मिडिल क्लास पीपल थे, पेजेंट्स थे, वो सारे के सारे सबको उठा के डाल दिया गया थर्ड estate में. So actually this was the division which was not accepted by the people of France, and as a result it led to the revolution. Now we'll be discussing about the causes that led to French Revolution. The first one is social causes, second one is economic causes, and the third one is political causes.
Now let's discuss the social causes in detail that led to French Revolution. Division of the society in three estates. As we discussed, the society was divided into three estates. The first estate consisted of clergy, second estate it consisted of nobility, and third estate it comprised of all the other people who were not included in the above two. जो बाकी दोनों में नहीं थे उनको उठा के थर्ड estate में डाल दिया गया था. It merely comprised of peasants, workers, laborers, lawyers, professionals, and 10% were rich businessmen. First two classes were exempted from paying taxes. They enjoyed all the privileges by birth. Clergy and nobility were 10% of the population but possessed 60% of the land, which was quite enough. Third estates were 90% of the population but possessed 40% of the land. Direct taxes called taille was charged. Tithe was collected by church from peasants. Again, this was a religious tax which was collected from peasants. As we have seen, the first two classes were exempted from paying any of the taxes. ये तो समझ में आ ही रहा है कि बड़ा ही अत्याचार हो रहा था सोसाइटी में. और सब के सब ये सारे जो बोलते हैं ना पाप का घड़ा भरने वाला था और अब विद्रोह की आंधी चलने वाली थी. Let's discuss political causes. So, talking about Louis XVI, he ascended the throne in 1774. और जब ये थ्रोन पे बैठे तो इनको ऐसा राज्य मिला जिसमें वी कैन से विच वाज ट्रेन्ड आउट. ना ही कोई पैसा था, ना ही वेल्थ थी, कुछ भी नहीं था. तो इनको जो खजाना मिला वो बिल्कुल खाली मिला. France under Louis XVI held the 13 American colonies to gain their independence from Great Britain. अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो पैलेस ऑफ वर्सिलिस था उसको मेंटेन करना और सारी ही चीजों को राज्य को चलाना बड़े ही पैसे की जरूरत पड़ती है. और हमारे जो लुईस 16 है इनको कैसा खजाना मिला था, ही वाज कम्प्लीटली ब्लैंक. उनके पास ना ही पैसे थे ना ही उनके पास उनको कुछ समझ में आ रहा था कि क्या करना है. तो भाई सिंपल सी चीज होती है, उन्होंने टैक्स लगा दिया हर चीज पे. Taxes were increased to meet the regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, and running government offices or universities. People protested against the high price of bread. खाने के लाले पड़ने लगे थे क्योंकि ब्रेड की कीमतें बढ़ने लगी थी, आसमान छूने लगी थी, जैसे अभी टमाटरों का हाल हो रहा है. The economic causes that led to French Revolution. तो जब भी हम बात करते हैं इकोनॉमिक कॉजेज की, एक बड़ा ही कॉमन सा वर्ड आता है, दैट इज सब्सिस्टेंस क्राइसिस. अब ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस एक्चुअली है क्या? The population of France rose from 23 million in 1775 to 28 million in 1789. And as a result, what happened? This increased the demands for food grain. However, the production could not pace up with the demand, which ultimately increased the price of food grains. ये demand और price का relationship है. Demand बहुत बढ़ रही थी, production हो नहीं रहा था, तो ultimately क्या होगा? Production कम है, demand ज़्यादा है, तो चीज़ों के दाम बढ़ने लगे, जैसा अभी टमाटर के साथ हो रहा है. And there was no increase in the wages of the workers. तनख्वाह उतनी की उतनी है, दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो बेचारे कॉमन पीपल, कॉमन आदमी, हम जैसे लोग क्या करेंगे? अब उससे भी बड़ी चीज हो गई, वो थी आपदाएं. हेल एंड ड्रॉट वर्सन द सिचुएशन एंड रिड्यूस द हार्वेस्ट. उपज हो नहीं रही थी, कयामत की वो बोलते हैं ना, आंधी चलने वाली थी और आग बरस रही थी. ना प्रोडक्शन हो रहा था, दाम बढ़ते जा रहे थे, तनख्वाह नहीं बढ़ रही थी, बड़ा ही क्राइसिस चल रहा था, जिसको नाम दिया गया था सबसिस्टेंस क्राइसिस का. This led to the scarcity of food or subsistence crisis, which started occurring frequently during the old regime. अब old regime के टाइम पे ना, ये जो पुराने वाले जो पूरी व्यवस्थाएं थी, इसके टाइम पे ये scarcity of food बड़ा ही कॉमन हो गया, क्योंकि ना प्रोडक्शन था, डिमांड बढ़ रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तनख्वाह बढ़ नहीं रही थी, बड़ी भूखमरी वाली हालत एक कॉमन सिचुएशन बन गई थी. किस टाइम पे? सबसिस्टेंस क्राइसिस के टाइम पे. In the previous slides, we have discussed about the causes, social, economic, and political causes. Now, there was a growth of a middle class that envisages an end to privileges. अब क्या होता है ना, जब हम
हमारा अप्रोच बढ़ता है एजुकेशन की तरफ, हम पढ़ते हैं, हम लिखते हैं, हम नई चीज़ों को जानते हैं, तो हमारी जो थिंकिंग है थोड़ी ब्रॉड होती है, हमें सही और गलत के बीच में फ़र्क समझ में आता है। एंड दैट्स व्हाट अबाउट टू हैपन हियर इन द सोसाइटी। Peasants used to participate in the revolts against taxes and food scarcity. जितने peasants थे उन्होंने revolt में participate करना शुरू किया, revolts करने start किए कि नहीं हमें taxes नहीं चाहिए, food scarcity हो रही है, and the group of third estate had become prosperous and had access to education and new ideas. So as a result क्या हुआ, धीरे धीरे prosperity बढ़ने लगी और उनका access होने लगा किसके लिए, education के लिए, पढ़ाई लिखाई से उनका थोड़ा तालमेल बैठने लगा. In the 18th century, new social groups emerged, termed as middle class, who earned their wealth through expanding overseas trade and by manufacturing woolen and silk textile that were either exported or brought by the rich members of the society. The third estate included professionals such as lawyers or administrative officials. All these groups were educated and believed that no group in the society should be privileged by birth. इनका मानना ये था कि आपको भाई जन्म से कुछ अधिकार नहीं मिलने चाहिए, उन अधिकारों को आप हासिल करो. So they believed rather a person's social position must depend on his merit. आपके अंदर जितने क्वालिफिकेशंस हैं, जितने गुण हैं, उस हिसाब से आपको प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, ना कि आप एक राजा की फैमिली में पैदा हुए हो तो आपके पास सारे प्रिविलेजेस आने चाहिए. नो. सो एक्चुअली दिस वाज अ we can say this was altogether a new thinking emerging, which was about to lead the revolution in a new way. Let's move forward to the next slide. जब भी कोई revolution start होता है, and when we compare the revolution to the French Revolution, as big as French Revolution, so certain type of people, they play a major role in this type of revolution, and these type of people are called as philosophers. So now we are going to study the role of philosophers in French Revolution. So actually philosophers played an important role during the French Revolution. With their revolutionary ideas, they inspired the common people of France and prepared them to fight against injustice. They gave the revolution the intellectual discourse needed to overthrow the monarchy for the first time. तो वो जो बोलते हैं ना, आक्रोश जो लोगों में पैदा करने का काम किसने किया था, इन फिलोसोफर्स ने. कैसे? अपनी फिलोसफी से. और वो फिलोसफी उन लोगों ने उन्होंने लोगों तक कैसे पहुंचाई? दे स्टार्टेड राइटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ देयर बुक्स. अपने थॉट्स, अपने आइडियाज को उन्होंने पेन डाउन करना स्टार्ट किया, एंड दैट्स हाउ दे कनेक्टेड विद द कॉमन क्राउड. These philosophers were rational and enlightened. They did not follow the religious rule of the time that believed in the doctrine of God, which established the absolute authority of emperor and placed him on par with God on earth. So basically इन्होंने criticize किया. Actually उस टाइम पे एक डॉक्ट्रिन फॉलो की जाती थी जिसमें एम्परर को भगवान के सामान्य रखा गया है, कि एम्परर जो होते हैं वो भगवान का दर्जा होता है उनका भी. सो बेसिकली इन्होंने क्रिटिसाइज किया उस चीज को. ही सेज कि इन फिलोसफर्स ने बोला कि वो भी एक कॉमन इंसान है, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है. हाउ कैन ही बी इक्वल टू गॉड एंड व्हाई वी कैन नॉट बी इक्वल टू गॉड? जितने पावर्स उसके पास है, जैसा वो है वैसे हम भी हैं. जस्ट बिकॉज ही इज बोर्न इन अ नोबल फैमिली, इन अ रॉयल फैमिली, उसके पास वो प्रिविलेजेस है, उसको भगवान की जगह पे बैठा दिया गया है. तो एक्चुअली दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग दिस कॉन्सेप्ट, दिस डॉक्ट्रिन. एंड उसमें बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर्स के नाम आते हैं. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड डिस्कस अबाउट सर्टेन फिलोसोफर्स जो थोड़े कॉमन से थे या जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के प्रोस्पेक्ट से. लेट्स स्टडी देम इन डिटेल. In the queue is John Locke, and his famous book, Two Treatises of Government. Actually, he openly refuted the theory aggressively, which states the doctrine of God. So basically, he was against this concept, which I have just now explained it. And next one in the queue was Rosio, another brilliant mind of the time, who came up with the idea of a form of government based on a social contract between the people and their representative. So basically इनका कहना ये था कि गवर्नमेंट बननी चाहिए, और वो गवर्नमेंट किस तरह की होनी चाहिए जहां पे लोगों का भी कुछ योगदान हो गवर्नमेंट को बनाने में. सो बेसिकली व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, वन पर्सन वन वोट वाला कुछ हिसाब किताब होना चाहिए, जहां पे हम अपने उम्मीदवार, अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट इलेक्ट कर सके, एंड फाइनली वो पार्ट हो, हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्ट हो किसका, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का. सो बेसिकली ये वाला आइडिया लेकर आने वाले कौन थे? रोजियो. Moving forward towards the next slide, we'll discuss about another great philosopher.
In the series, the next is Montesquieu. So, in his work, In the Spirit of Laws, he proposed a division of power within the government. So, he divides it into three sections: legislative, executive, and judiciary. So, this is an idea that we see many countries have adopted. Even we, India, have adopted this. सो आई थिंक ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि इन्होंने बोला कि पार्ट्स को तीन सेक्शंस में डिवाइड करो: लेजिस्लेटिव, जो लॉ बनाए; एग्जीक्यूटिव, जो उसको एग्जीक्यूट करने का काम करे, दैट इज अ पार्लियामेंट; और जुडिशरी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द जुडिशियल बॉडीज, जो ये इंश्योर करे कि बने हुए लॉ को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट किया जा रहा है या नहीं, उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं. सो बेसिकली ये आइडिया लेकर आने वाले कौन थे? Montesquieu. So we can give the credit to this person, this philosopher. In this slide, we will be discussing about the outbreak of the revolution. As we have seen, King Louis XVI जो थे वो बड़ी ही छोटी उम्र में उनको राजगद्दी दे दी गई, एंड फाइनली जो उनको राजगद्दी दी भी गई, वो उनको जो पैलेस मिला उसका खजाना बिल्कुल भी खाली था. मोर ओवर कंटिन्यूस वॉर्स चल रहे थे, 13 कॉलोनीज को लिबरेट करवाया, बहुत सारी चीजें हो रही थी. एंड वी नो कि एक इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए कुछ पूंजी की आवश्यकता होती है. तो अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने टैक्सेस इम्पोज करना शुरू किया. और टैक्सेस इम्पोज करने के लिए मोनार्की को बहुत सारे परमिशंस, वी कैन से, वो अपने डिसीजन, उनका होल सोल डिसीजन नहीं होता है. उनके लिए एक्चुअली दे हैव टू कॉल अ मीटिंग ऑफ एस्टेट्स जनरल. सो अब ये एस्टेट्स जनरल क्या होते हैं? It is a political body to which the three estates send their representative to pass proposal for new taxes. So as we have seen in France, the monarch didn't have the right to impose taxes. They have to call a meeting of the estate general. अब ये estate general क्या थे? यहाँ पे सारे representative आते थे तीनों estates के. We have seen first estate which included clergy, second estate that included nobility, and third estate that comprised of ऑल दी रिमेनिंग क्लासेस. तो अब यहाँ पे बाकी सारे स्टेट्स के तो रिप्रेजेंटेटिव थे और वो मीटिंग बुलाई गई. बट एक्चुअली ये जो मीटिंग थी, ये बहुत ही बड़ा वाला टर्निंग पॉइंट था. लुई 16 ने क्या किया? ऑन 5th May 1789 ही कॉल्ड एन असेंबली टू पास द प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस. अब उन्होंने बोला ठीक है भैया, हो गया. कुछ लोगों ने मीटिंग को बॉयकॉट किया, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, लोग वहां बैठे रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा. इन्होंने नया प्रपोजल पास कर दिया. Representatives from the first and the second estates were present, and the third estate was represented by its prosperous and educated members only. और बाकी जो थे वो बाहर के बाहर ही बैठे रह गए, क्योंकि उनको अंदर आने का और अपना वोट प्रेजेंट करने का भी राइट नहीं मिला. एंड दिस इज एक्चुअली द टर्निंग पॉइंट. अब यहाँ से क्या होगा इसके बाद वाले पार्ट में, बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टॉप इट हियर, एंड इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में, वेयर वी आर गोइंग टू सी कि अब वो वाला जो कॉन्सेप्ट है, एक था राजा एक थी रानी, इनके साथ क्या होने वाला है. ऑब्वियसली दोनों मर गए, खत्म कहानी. सो आगे की कहानी पार्ट 2 में मैं जारी रखूंगी.